क्या है जो पर्सनल अपीयरेंस हो गया? और इसमें पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन का मामला था और इसमें हुजूर का पिछला ऑर्डर था 18/10/2022 का कि अगर कॉम्पनसेशन पेमेंट नहीं करते हैं तो वन लास्ट चांस इज गिवन टू द कलेक्टर सुपौल एंड द कमांडेंट सीमा सशस्त्र बल 18th Battalion to pay compensation to the petitioner within a period of 6 weeks from today, failing which they will appear personally in the court on the next date of hearing. पेमेंट में डन? नहीं उस My lord, allow me to. There's a counter affidavit. Yesterday I talked to the district magistrate. Now there are two important facts, my lord. One is that yes, we have admitted that payment has to be made, and we'll do that payment. Now the entire process takes some time, my lord. 6 weeks time, because I can give you 6 or 8 weeks, but why this gentleman had to come? This collector did not inform him. कलेक्टर को हम कलेक्टर के लिए सर इधर आइए. नहीं, collector yesterday collector sent me the instructions, but anyway, collector talked to me yesterday, and I said okay, what he told me, what he has communicated, I say I'll communicate it to my lords, and still if my lord is of the view, because that okay, the collector has to come, he'll come tomorrow, day after tomorrow. I'm not calling him. But let me then explain why. My lords, in this case, there are 3 steps for land acquisition proceedings to happen. One is the SIA, we have exempted it. So there won't be any SIA in this, as far as this particular case is concerned. Now there has to be a preliminary notification and then there has to be a declaration. These two are very important aspects. I understand. I will grant you time. That is why but the collector should have informed this commandant that we are taking steps. There is no need of going to High Court. ये वाली बात कलेक्टर साहब से हमारी नहीं हुई. कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई. कलेक्टर साहब बोले कि हम आ जाते हैं, ये बातें हैं. हमने कहा कब कितने दिन बाद में पेमेंट करिएगा इनको? हुजूर ये पूरा स्टेप्स आप बोलिए ना एक ही बार. 6 महीना हमने एडमिट कर लिया है कि हम लोग करेंगे. ये हम पैराग्राफ पढ़ दे रहे हैं. The learned counsel for पैराग्राफ 9 हमने एडमिट कर लिया है कि पैरा 9 of counter affidavit reads as follows. Counter affidavit of the state reads as follows. Paragraph 8 and 9 both may be. 8 and 9 read as follows. In view of the undertaking of the collector, this application is disposed of with a direction to pay the compensation amount to the petitioner within 6 months. Next. ऊपर में कर दीजिएगा. The collector ought to have informed the Union of India and the commandant SSB about filing of the counter affidavit, and if the amount was being paid by the state, there was no need of the count. I'm sorry, there is one thing. But all this to happen, first there has to be a requisition by the requisitioning authority. That happens to be the SSB through the MHA. We have written letters, so now it's up to him. The moment he issues that requisition, we'll initiate that process. Who will issue it from MHA? My lords. Who will issue it from MHA? The man who's here. Lord, we have already, during the course of the acquisition proceeding, we have in acquisition proceeding is complete, we have made payment of entire amount as demanded by the DLO to the office of DLO. This is getting confusing, my lords. Now this was a special case. I will tell you. Heard the parties, the pursuant to the last order, the commandant SSB Supaul is Supaul na hai? Yes, sir. Virpur Supaul. Virpur Supaul is personally present. Just paragraph 7 may kindly be taken note of. 7, 8, 9. That is all. His appearance, personal appearance, is dispensed with. The copy of the counter affidavit be served upon the learned counsel for the Union of India, and he will act. The Union of India will send a fresh requisition for acquisition
and thereafter the collector will No, एक मिनट रुकिए, collector will take all steps for payment of the compensation amount to the petitioner. The state is granted 6 months time for payment after the requisition is made by the Union of India. We have issued a letter. We have issued a letter to the SSB. Just hold on, sir. आप देखा नहीं हम दे देंगे. We have issued a letter on 1811. The only request, because this is a special case, my lords. There was some fault that has happened. That is why we are exempting the SIA. We are not doing anything. We are just saying that the minimum possible shortest time. So all he has to do is, we have issued him a letter. So let him reply to that letter. That is क्या दिक्कत है आपको यूनियन? पहले तो काउंटर एफिडेविट की कॉपी दें कि हम भी कुछ कह सकें. जब इन्होंने काउंटर की कॉपी अभी तक सर्व नहीं किया तो हम कैसे सबमिट करें कुछ भी? हुजूर मेरा सबमिशन है जो एक टाइम दे दिया जाए, कलेक्टर साहब भी फाइल कर दें वो भी कि क्या है, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होगा तो हुजूर का डायरेक्शन होगा फिर नहीं मिल पाएगा. हम इसीलिए एक टाइम दे the process has to be followed ताकि हम उस पर इनको, that is why I was submitting, my lords, कि process has to be followed ताकि इनको भी बाद में परेशानी नहीं हो कलर, because कोई ऑफिसर 15 साल बाद आएगा बोलेगा कैसे counter affidavit filed by the state is taken on record. The learned counsel for the state will serve a copy of the counter affidavit to the counsel for the Union of India. Next, pursuant to last order, the commandant SSB has appeared. His personal appearance is dispensed with. List this case after 4 weeks. In the meantime, the Union of India will file its affidavit pursuant to the counter affidavit of the state. But in the meanwhile, the Union of India will take all steps pursuant to the letter dated, my lords, just. और इस 4 हफ्ते को हुजूर 1 हफ्ता कर दिया जाए, बट उसके कंप्लायंस पे कोई भी स्टेप हमारे लिए 18/11/2022 written by the collector to the commandant SSB battalion 18/45th battalion Birpur. इसमें हुजूर दिक्कत क्या होगा? एक बार इन्होंने 2006 जो, अरे भाई दिक्कत नहीं होगा, अब आप चिट करिए ना, दिक्कत क्या होगा कि हम थोड़े ठेका लिए हैं. वो पॉइंट वहां पे हुजूर नहीं है. ये जो अगर ये फिर से रिक्विजिशन करेंगे तो फिर से एक डिमांड रेज करेंगे कि अब आप इतना रुपया और दीजिए. अब दिक्कत, दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम. You to tackle it with the state government. Whether they will raise the demand twice, thrice, 4 times. They have already taken twice. They have raised the demand, and we have just. So MHA is not powerful enough to recover their amount, or tell them that we have already parted with the amount. This is a very hypothetical question. Ki we will raise the demand. I mean, we don't know. You issue. Who is instructing you? Who is instructing you? MHA is instructing you. Which officer? We have just received from Seema Sasasrabal, your lordship. We are No. Which officer of SSB? You are saying SSB. I am asking you which officer of MHA. Then you are saying Seema Sasasrabal. We are appearing on behalf of both the parties, and affidavit is being executed by the Seema Sasasrabal. I am interested in knowing who is giving instructions from MHA. None. Because then how do you argue these things? How did you argue these things? Because you are arguing hypothetically that this may happen, this may happen. Government agencies, when they are interacting, writing letters, how can you say that this will happen, this will happen? If they say that send fresh money, then you can say that no, the money has already been released in favor of the state of Bihar. That is why, your lordship, I am just submitting. So you tackle with the collector, you interact with the collector. आप फोन करिए, मीटिंग करिए. अब इसके लिए 4 हफ्ता तो दिए ना आपको हम. ठीक है. 4 हफ्ता बाद हम आपका फाइनल टाइम देंगे. मेरा एक ही सबमिशन है जो रिटेनिंग पोजीशन, क्योंकि 10 साल पहले एक्वायर किए हैं. हुजूर का ऑर्डर हुआ 10 साल 12 में दे चुके हैं. 10 साल हो गया, अभी लोग अभी तक ये लोग फुटबॉल नहीं, फुटबॉल नहीं. आप
रिटेनिंग इट्स पोजीशन नहीं, जिस दिन लिस्ट पर आएगा जी आप 10:30 बजे मेंशन करेंगे, हम टेकअप कर लेंगे। जी ठीक। My lord, we have made our stand very clear. That was we'll pay him that money. मतलब इसमें अब तो since we are making it very clear before my lords, it's an undertaking given by. अब now it is clear that he is going to get the going to amount. get the amount. हम लोगों ये 6 months टाइम इसलिए कि so that in future कभी कोई ऑफिसर आया, कभी कोई बोला कि साहब कैसे पैसे दे दिया, आपने प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किया, तो पता चला कि ये तो चले गए, हम चले गए, अब वो दूसरे से रिकवरी का और एक नहीं, अलग ठीक, तमाशा हो रहा है। उसमें जो रिटेनिंग इसलिए करें कि अगर हुजूर का बेंच रहा तब तो ठीक है, नहीं तो लैंड एक्विजिशन का मैटर आता ही नहीं है हुजूर। 10 साल से हम सफर कर रहे हैं हुजूर ऑलरेडी। At 10:30 ऑब्लाइज आपको मेंशन करना चाहिए था, इनको बहुत देर से आप बैठाए हुए थे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन समवन फ्रॉम दी फोर्सेस टू वेट। आगे से वैसा अगर पर्सनल अपीयरेंस रहे तो मेंशन कर दीजिएगा। चलिए, और किसी का कोई अर्जेंट? 356 में रेस्टोरेशन किसका अपीयरेंस है? पार्टी को बुलाएंगे। बुलाइए, फाइल नहीं है तो भी बुलाइए। सीरियल नंबर 750 एमजेसी नंबर 392 ऑफ 18 petitioner नेहा कुमारी वर्सेस दीपक कुमार एडवोकेट प्रोफेसर आदित्य नारायण सिंह एडवोकेट रेस्पोंडेंट मिस्टर दिलीप कुमार 53। अरे वो आइए भाई, जल्दी आइए तो। My lord, say in this case, I am on behalf of petitioner fairly submitting that in spite of the information given to him on his instruction of the father of the petitioner, the matter was fixed today, and in spite of several calls, he could not respond and did not come to the court. गया था लड़का लाने, Therefore, my lord, फादर जो है लड़की आना चाहती है, और वहाँ मेंटेनेंस का केस फाइल करके एक्स पार्टी ऑर्डर करा लिया है, जिसके रिकॉल के लिए वहाँ एक्स पार्टी के लिए फाइल की हुई चला रहा था। बिना सूचना का वहाँ से order ये केस कहाँ का है? आरा का है और पटना का भी है। और आप कहाँ से कहाँ चाहते हैं? वो पटना से आरा हो चाह रहे हैं। और अब हम आज के बाद आपका केस डिसमिस कर देंगे। कर दिया जाए हुजूर, चूंकि इन स्पाइट ऑफ द ये इन्फॉर्मेशन तो मैन, दिस फादर इज प्लेइंग फ्रॉड। करेक्ट है। लड़का ये तो खुद हमसे बोले भी है बेचारे, ये लड़का I गया था लाने, talked इसको भेजे him थे कि जाने twice दे आओ। time हवाना today चाहते। also। और कहाँ है मेंटेनेंस केस? मेंटेनेंस केस तो वहीं आरा में फाइल किया है, जबकि पटने में रहा था। और आरा में क्या हुआ है मेंटेनेंस केस में? मेंटेनेंस केस में एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, जिसके रिकॉल के लिए पिटीशन डाले गए। तो आप मेंटेनेंस केस का ट्रांसफर के लिए यहाँ पिटीशन लगाइए। तो ऑर्डर कर चुके हैं फाइनल एक्स पार्टी, उसके बाद हम अब रिकॉल वाला यहीं होगा। रहते वो पटना में है? हाँ पटना में पूरा हम डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं काउंटर ऑफ एफिडेविट। वो हमको नोटिस भी भेजा है, वो इसी एड्रेस से पटना? पटना जी, पटना एड्रेस से नोटिस आया हमको, और जवाब भी दिया है पटने पोस्टल पार्क के एड्रेस से। फाइल कहाँ है? फाइल कहाँ है? इट सीम्स, लिखिए, इट सीम्स दैट द father of the petitioner is controlling the petitioner and is fighting the litigation and harassing the sole opposite party, who has come from Visakhapatnam to appear in this case. Despite the order of this court, the girl has not appeared. It has been submitted by the learned counsel for the opposite party that the opposite party had gone to the house of the petitioner to bring her, but it is the father who is not allowing her to come back. पटना में ही है वो लोग? कौन सा थाना, क्या एड्रेस है? दानापुर में। दानापुर में कौन सा पुलिस स्टेशन है? जज कॉलोनी से। दानापुर जज कॉलोनी। वही जो रोड पर बाएं साइड में है। The ASP Danapur is directed to produce the girl day after tomorrow at 12 noon. On that date, the opposite party will also appear
ठीक है, On prayer, my lords, it may be noted down in spite of the information given by the counsel. ऊपर कर देते हैं. Mr. Adit Kumar Singh has informed, Adit Narayan Singh has informed the court that though the information for today's appearance was given by the petitioner to the father of the girl, but he has not. A matter was also referred on last occasion after. But the girl has not appeared. तो दानापुर को जो लिखे हैं ना, वो लिखिएगा फादर एंड द गर्ल एंड हर फादर, दोनों को पकड़ के लाएगा. द पिटिशनर इज गिवन लिबर्टी टू अप्रोच द ASP दानापुर विद द वेब कॉपी ऑफ द ऑर्डर so that the police can easily find the house of the petitioner. इसको कल प्रोनाउंस कर देंगे. ऑर्डर की कॉपी लेके ये दानापुर ASP के पास जाएगा. अपोजिट पार्टी. हाँ, वही जो अब देख लीजिएगा अपोजिट पार्टी. ये लड़का जाएगा दानापुर ASP के पास और वो उन दोनों को परसों प्रोड्यूस करेगा. किसी को परेशान करना, लड़का को परेशान करना या लड़की को परेशान करना, ये गलत है. अभी मेंटेनेंस केस जाके हरा में फाइल करके एक्स पार्टी ऑर्डर करा दी बिना इसको सूचना. टेलीफोन किए थे वहाँ के एम्प्लॉय. That is another thing. हाँ, वो तो ठीक है. कितना मेंटेनेंस है? मेंटेनेंस 11,000 की है. 11,000 रुपए की है. यहाँ पर कम कोई नहीं कोऑपरेट करेंगे और वहाँ मेंटेनेंस चाहिए. लड़की क्या करती है? पढ़ी लिखी है? तो तुम शादी कहाँ गलत जगह कर लिया? कितना तिलक लिया? तिलक कितना लिया था? 5 लाख मिला था चलिए सीधा है तो कई एक बार गया. आई हम. हाँ ठीक है. कमालुल्ला साहब के यहाँ भी हुआ था. बहुत ही बेचारे फोन भी किए थे कई. ये हमसे खुद बोले कि फादर दिक्कत कर रहा. सब के सब वही आ रहा. कल भी एक केस आया था जिसमें फादर दिक्कत कर रहा था. परसों आने दीजिए, लड़की को आने दीजिए. आई ऑलवेज फेयरली स्टेटेड कि भाई हम खबर कर रहे हैं. भाई अभी इसमें डिस्प्यूट में क्या वकालत करनी है, जो सच्चाई है वो हाँ, अगर सेटल हो ऐसा जाता है वो जो 756 हम इस लड़का को रेस्टोरेशन सीखे है, जो 756. कल रिस्टोर नहीं हो सकता है. फाइल रहेगा तब तो. ठीक ठीक.